Assalamu alaikum, dear students. Today we will discuss about the nutrition in human beings. Nutrition in human beings. Nutrition in human beings. Nutrition in human beings takes place through digestive system. Which consists of mouth, or buccal cavity, food pipe, or oesophagus. Stomach, small intestines, large intestines, and anus. These organs form alimentary canal. Alimentary canal. Besides these organs, there are some glands which also helps in the process of digestion. These are known as salivary glands, gastric glands, pancreatic juice, and bile juice. These are the glands which are associated with the process of respiration, process of digestion. So the first part of this digestive system in case of human beings, that is mouth. Mouth is the first part through which these human beings take food. Mouth. Human beings take food through mouth. And this process of taking food through mouth is known as ingestion. The first part of this digestive system, that's mouth, it's also known as buccal cavity. Human beings take food through this mouth, and the process of taking food through mouth
that is known as addition. So we can see the first process of nutrition in human beings, that is addition. Addition means taking out this food. Then this food which they take into the first part of this alimentary canal, mouth, this food goes through two process. One is mechanical digestion, and another one is chemical digestion. Mechanical digestion takes place through teeth, and chemical digestion takes place through salivary glands. So we discussed briefly the process of digestion in mouth. Mouth consists of the teeth. There are mainly 4 types of teeth in human beings. Mouth, teeth, and these 4 types of teeth are known as incisors. These are known as cutting teeth. They help in the process of cutting teeth. Canines. These are known as dragging teeth. These are strong in carnivores. यानी कि मतलब कि गोडनिक यस पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम्स मज ह्यूमन बीइंग्स मज यस अत मज एलिमेंटरी कैनाल गोडनिक ऑर्गन छ तत छ माउथ वनान यत पर साइंटिफिक नेम छ बकल कैविटी मज इंसान अस मज नजर छ दिवान यत मज गोडनिक अस चोरी किस्म टीथ आसान इस गोडनिक किस्म छ आसान यम ब्रोकन फ्रंट्स मज आसान शार्प आसान एज तमन छ इसमें incisors लगा कि सटस तवे वन कटिंग टीथ पछ दुयम किस्म आसान यमन अस वनान canines canines छ आसान अस dragging teeth यम छ आसान ज्यादा पन carnivores आसान carnivore मज छ स्ट्रांग आसान पछ छ अस पर molars and premolars यम दिस वन वनान grinding यम छ लगन कत लख चीज ब्रकमस पीसमस ग्राइंडिंग एम अलाव छ यत मज आसान यत मज tongue is a muscular organ. It helps in the process of movement of food. यानी कि मतलब इस मज गजा त्रावान ये ब्रकोई पी जेव अत कर तुल त्राव मूवमेंट गसान and this tongue also helps in perceiving the taste. Am muzzle love. There are mainly 4 types of tastes. Because sweet, bitter, sour, and salty. This is mute, that is located on the tip of tongue.
tip of tongue. Bitter is on the posterior side. Bitter is sore. This is thoda texture to be used. Soak chasan is nice sparkling taste. Because in taste perceive करने का तो शेम में ज़ी में taste buds है सोर किस्म taste buds अक्सर इसमें sweet बिकस इसमें bitter बिकस इसमें sour बिकस इसमें salty is on the sides and middle of the tongue. इमलाक क्या plate is soft plate be hard plate आसान interior side soft plate आसान यत मस क्या गसान कि माउथ मस इंसान गजा गसान आ गणथी mechanical digestion गसान due to the teeth. It helps in the crushing of this food into the pieces, and this food it is moved with the help of tongue. So the movement of this food inside the mouth takes place through this tongue, and this tongue also contains taste buds. Taste buds are of 4 types: sweet, bitter, sour and salty. And these taste buds helps us in the process of perceiving the taste, different tastes. Besides these, there are salivary glands. There are 3 pairs of salivary glands. 3 pairs of salivary glands. ये मलाक शासा है समझ 3 किस्म 3 pair. और ये 6 salivary glands शासा है. What are these? Parotid gland. Parotid gland how be सुबह की भाई किया जैसे समझ कि parotid gland की मन जाए कि अब तक लगते हैं मुझे तो की मन जाए गई parotid gland. ये मलाक शासा है maxillary gland. Maxillary या उन्हें lingual थे बीच तक किया रहा सब maxillary. यम क्या सुचेस करन अख एंजाइम अख सेक्रेट दैट इज सिल्वरी amylase में सुना टाइलिन सिल्वरी amylase और टाइलिन TTYLIN यम सातन ये सिल्वरी amylase या टाइलिन when it mixes with water they form saliva. So we can say this saliva is the mixture of this enzyme tylen and water, and this saliva they mix with food during its movement with the help of tongue. So the process of mechanical digestion which takes place through these teeth, and the chemical digestion which takes place through this salivary amylase or tylen. This salivary amylase or tylen that produce an enzyme that is known as salivary glands produce an enzyme that is known as salivary amylase or tylen. So the process of chemical as well as mechanical digestion takes place in mouth. But this salivary amylase they digest only carbohydrates. यानी कि मतलब सिर्फ ची गसान यमो सिर्फ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट स्विच गसान तकरीबन 30%. So 30% carbohydrates are digested in mouth. Yus es protein te fat chu asan atmos te bi digestion chu mouth mus gasan. Tumuk matlab go insan es guza khamo yus es process of digestion chu gasan start gasan mouth pet magar mouth s mach sirf digestion gasan kimich carbohydrate switch gasan 30%. At pet क्या जो है यूसी मिसाल के तौर पर ये गुज़ा असल पर ब्रैकना आती वहाँ बनाने बोल्स so ball is shown. Then this food passes through a muscular tube that is known as food pipe or esophagus. इन पत क्या चुका है इन पत ये गुज़ा इस निवान ये चीज़ पत पकनावा through food pipe चीज़ पकनावा वादनावा इस muscular bags में यह इस माना चीज़ stop. Suppose यार बनिमन suppose इसमें यदर food pipe. Suppose इसमें food pipe
फूड पाइप मज क्या यह फूड पाइप मज फूड पाइप passes this food from mouth to the stomach through peristaltic movement. Peristaltic movement means alternate contraction and relaxation. Alternate contraction and relaxation. Empachi, the some muscular bag-like structures must. Yeah, this one actually stomach. Stomach must get like stomach small small. If food goes out, it must go. Stomach can produce gastric juice. Gastric juice must stomach must क्या क्या शोषण stomach must gastric juice. यत मच में HCl आसान बीच में अपना सब पेप्सिन बीच अपना साइक्लोस म्यूकस ये मुन त्रिशवें चीज़ों क्या चीज़ होना गैस्ट्रिक जूस यम क्या करा ये पेप्सिन चीज़ करा प्रोटीन डाइजेशन यम मतलब को वैस ना गए माउथ मस गो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट यत मस स्टमक मस गए प्रोटीन डाइजेशन अलबत्ता फैट पुरना इसमें डाइजेस्ट फैट खतु छमे किया जाए कि बुड बार ऑर्गन आसान यत वन लिवर क्या पन सेक्रेशन त्रावा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज नोन एज डोडेनम यत मशीन पर आसान ये नेक लाइक स्ट्रक्चर यत मस यत यूसी नेक की स्मॉल इंटेस्टाइन हसी जाय आसान in small intestine must क्या small intestine must यत मश यत में आसान यत गॉडन को फर्स्ट पार्ट है यत मश यत मज यत पेनक्रियास इस फर्स्ट पार्ट small intestine डोडेनम तुम मतलब डोडेनम पे सेक्रेशन अक्ष पे पेनक्रियाटिक जूस बेश पे यत मज बाइल बेश पे बाइल अलावा पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करना पेनक्रियाटिक लाइपेस ट्रिप्सिन करना लाइपेस फैट डाइजेशन करना बे अगर प्रोटीन की रूदमुत स्टमक मज कह डाइजेस्ट गसने सह प्रोटीन से डाइजेस्ट गसने अलावा बाइल दैट इज ग्रीनिश इन कलर यह क्या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स यानी कि मतलब यह फैट ड्रॉपलेट माइक्रो ड्रॉपलेट अत कन्वर्ट माइक्रो ड्रॉपलेट तवे तम कुछ पेनक्रियाटिक लाइपेस हेकान फैट्स पे पन एंजाइमेटिक एक्टिविटी स्मॉल इंटेस्टाइन मज डाइजेशन कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन डाइजेशन करना लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ करना reabsorption of water from the undigested matter or fecal matter अलबत्ता इस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सह कंप्लीट गसान सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन मज एम पे गसान यम फूड गो डाइजेस्ट असल पे एम पे गसान प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन खतर क्या स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर कन ल्यूमिन आसान अमिक वॉल तुम हाईली फोल्डेड तुमन वन विलाई increase the surface area for the process of absorption गो ये absorb इंसान digested food absorb गो पत through blood circulation various parts of the body तक process of assimilation क्या assimilation यानी कि मतलब यह पत इस्तेमाल करना
अलबत्ता युस पत सरप्लस फूड आस युस नस पत जरूरत लग कहीं सु च स्टोर करने इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन अलबत्ता युस वो अनडाइजेस्टेड मैटर छु आसान अनडाइजेस्टेड फूड सु च वाव नेरा थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन पत सु नेरा थ्रू ओपनिंग दैट इज नोन एज रेक्टम यह नेरा पत तत च वना इजिशन तमिक मतलब गो वनिस ताम कि डाइजेशन मे स्टोर प्रोसेस गसान वन इज इंजिशन को टेकिंग ऑफ फूड थ्रू माउथ and absorption is the process which takes place in the small intestines where the food is completely digested. These absorbs with the help of these finger-like projections which are present on the surface of these inner walls, and these projections are known as villi. Imagine my question, short question, very short answer कि villi क्या हो? Villi को actually finger-like projections are outgrowths on the inner walls of these small intestines, and these villi help us in the process. They increase the surface area. For the process of reabsorption of this digested food. In process of assimilation this food which these intestines take, they get circulated or they are sent to the various parts of the body through blood while it is used for various metabolic activities. And the undigested food or the fecal matter that's expelled out through this rectum, and the process is known as digestion. Thank you.